Hello everyone. In this video, we discuss learning with complete data in statistical method. In previous video, we discussed introduction about the statistical data in brief. Okay, so now we discuss learning with complete data. In next video, we discuss learning with hidden data (EM) algorithm. So in this video, we discuss only complete data for the statistical learning. So in complete data, we have a subpart, few subparts like maximum likelihood parameter learning, discrete method, discrete model. Second one is the navy based model, and third one is the maximum likelihood parameter learning in continuous model. So we have discussed three sub part in learning with complete data in one by one. So first of all, discuss what is a maximum likelihood. Okay, in our probability or in our probability learning, we have discussed a Bayesian belief network or Bayes network. So in that unit, we have discussed a Bayes theorem. So and now we discuss a maximum likelihood. What is a maximum likelihood? When we talk about the final simplification is provided by the assuming a uniform prior over a space of hypothesis. But that means हमारा जो hypothesis है उसको क्या करना है, assume करना है. वो assume कैसे हम करेंगे कि वो simplify हो, हमारा जो कोई भी hypothesis that means assumption value हो, वो क्या होना चाहिए, that means वो हमें satisfy होना चाहिए, जो सिंप्लीफाई भी होना चाहिए, सेटिस्फाई भी होना चाहिए. ओके, इन दैट केस MAP learning reduced to choosing edge that maximize the probability of D hypothesis D given by hypothesis. हमें क्या करना है, या हमें ऐसा हाइपोथेसिस दैट मीन्स हमें ऐसी एच की वैल्यू क्या करनी है, एच की वैल्यू हमें ऐसी आइडेंटिफाई करनी है, ऐसी चूज करनी है जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा गिवन ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब हमें जो प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है कि जो हाइपोथेसिस हो उसकी डेटा की प्रोबेबिलिटी वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमाइज होनी चाहिए. हमें क्या करना है, ऐसी एच की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है. दिस कॉल्ड द मैक्सिमम लाइकलीहुड हाइपोथेसिस. ओके, HML. Okay, probability of any data that given hypothesis is a maximum. Okay, जो हमारे हाइपोथेसिस दिया गया है उसमें जो हमारा डेटा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम होनी चाहिए. सपोज कि यहाँ पर मैंने कैंडी वाला एग्जांपल ले लिया है. सपोज कि यहाँ पर मेरे पास 5 हाइपोथेसिस है और मैंने कोई एक कैंडी है जो नीचे गिर गई है, जो ड्रॉ हो गई है, उसमें क्या करना है, उसमें मैं पिक कर रही हूँ. अब उसकी प्रोबेबिलिटी, उसका हाइपोथेसिस क्या होगा, तो दैट मीन्स वो डेटा वो उसका या तो फिर चेरी की होगी या तो फिर लाइम की होगी, या चेरी और लाइम दोनों में से कोई एक की तो होगी ही होगी. ठीक है, तो वो मैं कौन सा लाइकलीहुड, मैं कौन सा हाइपोथेसिस चूज करूं, दैट मीन्स H1 चूज करूं, H2 चूज करूं, H3 करूं, H4 करूं और या H5 करूं, मैं कौन सा वो हाइपोथेसिस है वो चूज करूं, जैसे कि मेरा रिजल्ट है वो क्या है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला आए. तो सपोज कि मेरी कोई एक कैंडी गिर गई है और मैंने हाइपोथेसिस है वो H2 सिलेक्ट किया है और वो कैंडी लाइम की है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, कम आएगी. क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाइम की कैंडी 2 है और बाकी की बची 6 कैंडी क्या है, वो चेरी की है. अगर मैं H3 का हाइपोथेसिस लेती हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सिलेक्ट होने की ज्यादा आएगी. क्यों, क्योंकि 3 लाइम की और 3 कौन सी है, चेरी की है. इसीलिए वो क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आएगी, किसकी, लाइम या तो फिर चेरी सिलेक्ट होने की. दैट मीन्स यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऐसा हाइपोथेसिस चाहिए जो हर एक डेटा के लिए क्या देना चाहिए, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम देनी चाहिए. सो फर्स्ट, this one is the maximum likelihood hypothesis. Now we discuss a first subpart of learning method for the complete data. This one is the maximum likelihood parameter learning for the discrete model. Okay, so in this model we have a data are the complete, that means when we have each data point contains a value for the every variable in a probability model being a learned. हमारे पास जो रो है, हमारे पास जो कॉलम है, उसकी each and every cell filled by any value, filled by any
number, okay, filled by any details. This is called the complete data. When we talk about the discrete model, statistical learning method being with the simple task, parameter learning with the complete data. If we have a student's data like name, marks, attendance, behavior, performance, regularity, xyz, any parameters, and we have this kind of the parameters in details, or we have all details for regarding student, so we can say this one is the complete data. Okay, if we have overfitting data, that means insufficient data, improper data, this is called overfitting data. In a bag of lime, okay, now we discuss a lime example in our statistical learning method. First, maximum likelihood parameter learning. Okay, so in this method we will discuss candy bag example. Okay, so in bag of the lime and cherry candy from the new manufacturer whose lime cherry proposition are completely unknown, that is the fractional, could be anywhere between 0 and 1. 0 के 1 के अंदर से कोई भी फ्रिक्शन नंबर उसका हो सकता है. सपोज कि our cherry candies are theta, then our lime candies are 1 minus theta. Okay, that means hypothesis cherry candy is hypothesis of theta. If we have talk about the lime data, lime candies, then proposition of lime is just 1 minus theta. क्यों? क्योंकि उन दोनों का जो समेशन है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 ही होगा. ठीक है, अगर हमारी चेरी कैंडी की प्रोपोर्शनल है वो थीटा है, तो प्रोपोर्शनल ऑफ लाइम कैंडी की क्या होगी उसके 1 माइनस थीटा. ओके, वी हैव सपोज वी हैव any one candies like f is equal to cherry. If we have a cherry, pick any candy and this one is the cherry, but we don't know because this one is the unknown vapor. Okay, now we probability of cherry candy and probability of lime candy. So if we talk about the cherry candy flavor, okay, then we can represent as a theta 1, and if we talk about the lime flavor, then we can say is a theta 2. Okay, now if we have if our bag contain only lime and cherry candy, then we have n number of candies in our bag, so we can say like that n is equal to c plus n. If we talk our, okay, this one is a c cherries and n minus c is equal to lime cherries. Okay, we can say like that. Okay, now in our statistical method here we have discussed okay, one one Bayesian network, Bayesian formula for our hypothesis and data. So this one is our same data. ओके, हाइपोथेसिस एंड डेटा, बट यहाँ पर डेटा और हाइपोथेसिस है. अगर हमें उसकी प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डेटा गिवन हाइपोथेसिस, मतलब हमें क्या करना है, वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड, ये वाली जो वैल्यू है कोई भी हाइपोथेसिस पर उसकी प्रोबेबिलिटी, डेटा की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, उसकी हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है. तो हम कैसे करेंगे, सारे के सारे डेटा के ऊपर से, तो हम ऐसे फाइंड आइडेंटिफाई करेंगे पाई जे इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जे गिवन हाइपोथेसिस ऑफ थीटा. मतलब जे की कोई भी वैल्यू हो, ओके, डेटा की कोई भी वैल्यू हो, बट वो हाइपोथेसिस पर क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम होनी चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पर चेरी की कैंडी का मतलब थीटा ऑफ चेरी डॉट 1 माइनस थीटा ऑफ लाइम. ओके, दैट मीन्स जो थीटा की चेरी का जो वैल्यू है वो और लाइम का वैल्यू है वो क्या होगा, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन hypothesis of theta. The same value in obtained by maximum likelihood for the log. अगर हम उसको log implies करें, log implies अगर हम ये वाले फॉर्मूले को log implies करेंगे तो कैसे होगा, log of probability, यहाँ पर p आएगा. Okay, so here we have a p, log of p, data given hypothesis is equal to log of p data given hypothesis. Now we
put the equation into our data. So log of dj of hypothesis. Now here we apply a logarithm for this function. Okay, so c of log theta plus plus L dot log 1 minus theta. So this one is our logarithm function for the maximum likelihood for the parameter learning. Okay, after that we apply the differentiate for the logarithm function with respect to theta and set the resulting expression to 0. Okay, here we derivative our L function into respect to the theta. So dl of data given of hypothesis upon data of d theta. So here we have a c upon theta minus L upon 1 minus theta is equal to 0. But if we टॉक अबाउट वन बाय वन, ओके, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर करना है कि ये वाला है ना उसका बेस एक करना है. बेस एक कैसे करेंगे कि उसका कॉमन लेकर, कॉमन कैसे लेंगे कि ये वालों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, ये वाले को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को क्या कर दे, हम मर्ज कर दे. तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये इसको यहाँ पर ले लिया, इसको यहाँ पर ले लिया और ऑलरेडी यहाँ पर तो 0 ही है तो यहाँ पर उसको यहाँ ले लिया, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया. अब हमें क्या करना है, c into 1 minus theta minus L into theta. L is that means line and C that means candy. Okay, cherry. Okay, so now C we solve this equation is equal to C is equal to L plus C डॉट थीटा. थीटा को हमें क्या करना है, थीटा को हमें हमारा जो फॉर्मूला है उसका RHS बनाना है. तो हमने क्या किया, RHS बना दिया थीटा को और हमें क्या मिला, C upon L plus C, but L plus C is equal to N. So here we can say theta is equal to C upon N. So what is the probability of L of given data, L probability of D given data of H, that means C upon N. This one is the maximum likelihood for the parameter. Now we discuss a naive Bayes model. Naive Bayes model, that means assuming the Boolean variable. Boolean variable, that means true or false value. Okay, you have already learned about the naive Bayesian theorem in your data mining subject. Okay, data mining and data warehouse subject. So here we will not discuss about in details what is a naive Bayesian and what kind of the formula are that, but here I have directly talk about the naive Bayes model. So naive Bayes model is assuming Boolean variable. Naive Bayes, that means true and false. If our data theta is equal to p and candy is true, if our candy is true, अगर वो हमारी कैंडी है तो वो थीटा 1 होने का, दैट मीन्स वो कैंडी चेरी होने का और कैंडी चेरी न होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब उसका थीटा क्या है, वो वाला ये फॉर्मूला है. ओके, सो हियर वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, मतलब चेरी होने की, कैंडी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट मीन्स अवर hypothesis x1 x2 up to xn probability of each class. Okay, so here we have a normalization constant dot p of c and pi I is I dot probability of x given c. जो हमारा Bayesian network का जो फॉर्मूला था वही हमने यहाँ पर लिया है. सिंप्लीफाई द कैंडी प्रोबेबिलिटी विथ x1 to x5. ओके, जो कैंडी की प्रोबेबिलिटी है वो x1 x2 x3 की प्रोबेबिलिटी है, उसमें से कौन सी है सिलेक्ट करने वाली, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमने आइडेंटिफाई किया है. एंड नाउ लास्ट वन इज द मैक्सिमम लाइक्लीहुड पैरामीटर लर्निंग फॉर द कंटिन्यूअस मॉडल. ओके, the principle for the maximum likelihood learning are the identical to those of the discrete case. लाइक फर्स्ट केस हमारा क्या है, फर्स्ट केस ये हमारा है कि सपोज कि हम कोई एक फैक्टर पैरामीटर ले लेते हैं. सपोज कि हमारा फैक्टर है, पैरामीटर है, वो एज है. अगर आपको कोई बोले कि आपकी एज है वो कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, नंबर बोलोगे. बट अगर आपको कोई बोले कि आपका एज का सिनारियो क्या है, दैट मीन्स आप कौन सी एज का स्केल में आते हो, आप चिल्ड्रन हो, यंग हो, या तो फिर मिडल एज में आते हो, या तो फिर सीनियर सिटीजन हो. ओके, सीनियर सिटीजन हो, आप क्या हो. तो अगर आपको कोई ऐसे बोले कि आपको कोई बोलेगा कि हाँ मैं चिल्ड्रन हूँ, या तो फिर आपको कोई बोलेगा ये मैं एडल्ट हूँ, या तो फिर आपको कोई बोलेगा कि मैं यंग हूँ. ओके, या तो फिर आपको कोई बोलेगा कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तो आप उसे
कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, कोई एक फंक्शन यूज़ करना है। सो हम यहाँ पर गॉसियन डेंसिटी फंक्शन का यूज़ करते हैं। दिस वन इज द मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, गॉसियन डेंसिटी फंक्शन। इट इज़ अ वेरी इन इफ अगर मैं यहाँ पर गॉसियन डेंसिटी फंक्शन आपको समझाने बिठाऊंगी ना, तो उसका एक अलग से वीडियो होगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड पैरामीटर लर्निंग में कंटिन्यूस मॉडल की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, गॉसियन डेंसिटी फंक्शन का यूज़ करना है। उसमें क्या होता है, आप जैसे जैसे आप आगे चले जाओगे ना, मतलब अब जैसे जैसे आपका वेट है वो अपडेट होता जाएगा ना, वो वैसे वैसे वो डेंसिटी क्या करता होगा, सीखता जाएगा, वो उसके आउटपुट के करीब होगा। सो गॉसियन डेंसिटी फंक्शन इज अ वेरी important topic and very useful topic for the machine learning and machine learning concept. So we can here we have not discussed about it, but we only took a formula for the Gaussian density function. So this one is the formula for the Gaussian density function. This one is the 1 upon under root of 2 pi sigma dot e raised to minus x minus mu, okay, raised to स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ पर म्यू क्या है, म्यू दैट मीन्स म्यू, उसे बोलते हैं म्यू, दैट मीन्स दैट इज अ मीन, सिग्मा दैट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड एक्स दैट मीन्स ऑब्जर्व वैल्यू। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो गॉसियन डेंसिटी फंक्शन है उसमें लॉगरिदम है, वो हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पर लॉगरिदम अप्लाई कर दिया है, तो उसका लॉग जैसे ही हम यहाँ पर लगाते हैं ना, तो वो कुछ ऐसा आएगा आइडेंटिफाई होकर। और वो उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको ये सब मगअप ही करना है, क्योंकि ये वाला जो कंसेप्ट है वो मैथ्स का कंसेप्ट है, साथ साथ में भी मशीन लर्निंग का कंसेप्ट है। अगर हम यहाँ पर डीप में वो उससे कैसे डिराइव होता है वो सब हम डिस्कस करेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पर यही ख्याल रखना है कि वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कैसे हम लिखेंगे वो आपको लिखना है, वो आपको करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 फॉर्मूला ले लिए, log of this one and log of this one, okay. So if we apply derivation on our logarithm function, then we can say 1 minus of 1 upon sigma, and this one is our function is equal to 0, and mu is equal to like that, and we apply in both side in both formula. So we derived a mu function and sigma function, or mu and sigma RHS in both side. So this one is the मैक्सिमम लाइक्लीहुड पैरामीटर फॉर द कंटिन्यूअस मॉडल। जब आपके मॉडल में कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है, कुछ ना कुछ टाइम के साथ साथ उसमें अपडेट आता रहेगा, तो आपको क्या करना है, उसको गॉसियन डेंसिटी फंक्शन के मदद से उसको क्या करना है, अपडेट करते करते आपको उसका आंसर देना होगा। सो दिस वन इज द स्टेटिस्टिकल लर्निंग मेथड फॉर द complete data. In next video we will discuss about the incomplete data, that means hidden data, and we have already we will discuss EM algorithm for that, how it is a work. Okay, thank you.